Our today's lecture is about the automatic processing of the X-ray film. We previously studied about the manual processing that we performed in the darkroom, and the steps are same. If we compare the automatic processing with the manual processing, steps are same. We carry out all the basic steps, which are developing, fixing, washing and drying. But the difference is that we do not perform it manually. We do perform it in the darkroom, just like the manual processing, but the automatic processor is going to perform all these steps. So starting from the introduction, with the introduction of roller transport automatic processing in 1956, the efficiency of radiologic services was increased considerably. Automatic processing has resulted in better image quality because each radiograph is processed in exactly the same way. The opportunity for human variation and error is nearly absent. The principal components of an automatic processor are the transfer system, the temperature control system, the circulation system, the replenishment system, and the dryer system. So we have all those components that we need to process over X-ray film. The human error is very low as compared to the manual processing. That's why we get the better image quality, and also we can control the time and the temperature of developing and fixing in the automatic processor. We have an automatic time selecting and temperature selecting panel on the machine. This is a schematic diagram of the automatic processor. You can see various compartments separated from each other, and you can see that each compartment contains rollers of varying size. The first is the developing tank, the next is fixing tank, then comes the washing tank, and the last one is our drying chamber. The first step, which is in the developing automatic processing, is a feeding tray. We put our X-ray film here, and the basic thing that we should consider is its placement. Placement is very important. फीडिंग ट्रे में आपने जिस तरह से अपनी एक्सरे फिल्म को प्लेस करना होता है, that's very important. The size, the widest part of your X-ray film should be facing the automatic processor, and the sides, जो narrow sides होती हैं आपके X-ray film की, वो short axis के ऊपर आनी चाहिए. Once you place your X-ray film in the feeding tray, rollers जो हैं वो automatically उसको अपनी तरफ pull करना शुरू कर देता है, and the processing जो है वो it starts. There is a micro switch as well, which you can see. Once you place your X-ray film in the feeding tray, ये micro switch on हो जाता है, और जब ये on होता है तो it starts the replenishment system because it needs some time. आप temperature select करते हैं, आप time select करते हैं, और उस temperature को maintain करने के लिए the replenishment system needs some time. That's why this micro switch allows the replenishment system to on, and it starts working already, ताकि जब आपकी इमेज वहाँ एक्सरे फिल्म वहाँ तक पहुँचे तो वो रेडी हो. इसके अलावा यू कैन सी द क्रॉस ओवर रैक्स. अब फर्स्ट स्टेप आपके पास जो है वो डेवलपिंग है. यहाँ से जब सारे केमिकल से आपकी इमेज पास आउट होती है, एंड इट हैज़ टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ फिक्सिंग. तो ये क्रॉस ओवर रैक्स होते हैं आपके पास, जो कि आपकी फिल्म को बेंड करते हैं और नेक्स्ट रैक तक पहुंचाते हैं. हर स्टेप से पास होने के बाद आपकी एक्सरे फिल्म फाइनली ड्राइंग चैम्बर तक आती है, जिसमें हम ब्लो ड्राई करते हैं अपनी फिल्म को, एंड वी गेट आवर प्रोसेस्ड फिल्म हियर इन द रिसीविंग bin. And because definitely for the bending of our X-ray film and to pass it through each chamber, we need a motor, and this is
the major part which is going to perform these steps. सारी की सारी जितनी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सारा काम आपके पास मोटर एंड ड्राइव चेन का है. दिस इज़ द फीडिंग ट्रे. यहाँ पर यू कैन सी किस तरह से आपने अपनी एक्सरे फिल्म की प्लेसमेंट करनी है. दिस इज़ हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड and you can see the short axis on the side of the tray and the widest portion of the X-ray film facing the automatic processor. So that's how you place your film. एक time में you can place only a single X-ray film, and once the micro switch is on and you get a voice of tech, and then you can place your second X-ray film. This is the transport system. The transfer system begins at the feed tray, which I have shown you earlier, where the film to be processed is inserted into the automatic processor in the dark room. Their entrance roller scrape the film to begin its trip through the processor. A micro switch is engaged to control the replenishment rate of the processing chemicals. Always feed the film evenly using the side rails of the feed tray and alternate sides from film to film. This ensures even wear of the transfer system components from the entrance rollers. The film is transported by the rollers and dragged to the wet chemistry tanks and the drying chamber and is finally deposited in the receiving bin. हमने ऑलरेडी ये स्केमेटिक डायग्राम के अंदर सारे स्टेप्स को एक दफ़ा देखा है. We saw that how we place the X-ray film in the feeding tray, and we also saw the placement of the correct placement of the X-ray film. And once we place our X-ray film in the feeding tray, the rollers are going to grip the X-ray film. The micro switch is going to command the replenishment system to start working. The replenishment system needs some time to maintain the optimum temperature and time for the precise processing of the X-ray film. And after that we get our X-ray film in the receiving bin after processing. The transfer system not only transports the film, it also controls processing by controlling the time. The film is immersed in each wet chemical. Timing for each step is processing is governed by careful control of the rate of film movement through each stage. The transport system consists of the following three principal subsystems: rollers, transport tracks, and drive motor. Three types of rollers are used in the transport system. Transport rollers with a diameter of 1 inch convey the film along its path. They are positioned opposite one another in pairs or are offset from one another. A master roller with the diameter of 3 inches is used when the film makes a turn in the processor. A number of planetary rollers in metal or plastic guide shoes are usually positioned around the master roller. Let's give a review to our schematic diagram. यहाँ पर हमारे पास कंपार्टमेंट्स हैं. ये दिस इज़ ओवर होल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोलर सिस्टम भी जिसे हम कह रहे हैं. यू कैन सी द वेरिड साइज ऑफ द रोलर्स. आपके पास हर रैंक के अंदर ट्रांसपोर्ट रोलर्स हैं जो कि बेंडिंग में, नॉट इन बेंडिंग बल्कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है फिल्म की उसके अंदर हेल्प करें. हर रैंक के एंड पे यू कैन सी अ मास्टर रोलर जिसका साइज जो है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 inches वाइड. And this master roller has various planetary rollers around it, and these planetary rollers, this is the master roller, and these planetary rollers are going to help in bending of the film to move it into the next rack. Let's say अगर आपके पास डेवलपिंग का प्रोसेस हो रहा है और ये जो 1 inches वाले आपके रोलर्स हैं इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है आपकी फिल्म को, एंड एट द एंड आपके पास जो मास्टर रोलर है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 inches वाइड, इसके ऊपर आपके पास गाइड जो है शू भी होते हैं और इसके ऊपर ग्रूव्स होते हैं जो कि आपकी फिल्म की बेंडिंग में हेल्प कर रहे होते हैं. इसके बाद आपकी फिल्म जब बेंड होती है तो इट गोज़ टू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट.
So that's how the rollers are going to work in the automatic processor. Except for the entering rollers at the feed tray, most of the rollers in the transport system are positioned on a rack assembly. These racks are easily removable and provide for convenient maintenance and efficient cleaning of the processor. We just saw किस तरह से आपके पास जो कंपार्टमेंट्स हैं, जो रैक्स हैं, उनके अंदर आपके पास रोलर्स मौजूद हैं. So definitely during the processing we are using various chemicals. बहुत सारी जो contamination है वो जो आपके रोलर्स के ऊपर जो हैं वो रह जाएंगी और यू नीड टू क्लीन योर रोलर्स एज वेल टाइमली. तो आपके लिए जो रैक्स हैं ये इजी बना देते हैं क्लीनिंग को. These racks are easily removable. When the film is transported in one direction along the rack assembly, only 25 mm 1-inch rollers are required to guide and propel it. हमने अभी देखा है पीछे स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर कि हमारे पास 1 इंच के साइजेस के रोलर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, जो कि आपकी फिल्म को जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं. और जो आपके पास 3 इंचेस के मास्टर रोलर्स थे वो बेंडिंग के 180 डिग्री की बेंडिंग के लिए जो है वो उनको हेल्प कर रहे हैं. At each bend, however, a curved metal lip with smooth grooves guides the film around the bend. These are called guide shoes. For a 180 degree bend, the film is positioned for the turn by the leading guide shoe. It is propelled around the curve by the master roller and its planetary rollers and leaves the curve by entering the next straight run of rollers through the trailing guide shoe. When the film exits the top of the rack assembly, it is guided to the adjacent rack assembly through a crossover rack. The crossover rack is a smaller rack assembly that is composed of rollers and guide shoes. Power for the transport system is provided by a fractional horsepower drive motor. The shaft of the drive motor is usually reduced to 10 to 20 rotation per minute through a gear reduction assembly. This is the master roller, which is approximately 3 inches in the diameter, and you can see the various planetary roller around it, and also you can see the guide shoe for the 180 degree bending, and you will get it in each rack for the bending and processing, for the processing into the next rack. ये इंडिविजुअली एक आपके पास जो है वो रैक असेंबली को शो किया हुआ है. लेट्स सपोज अगर ये आपके पास डेवलपिंग का रैक है, उसके अंदर आपके पास सारी की सारी वेट केमिस्ट्री है. यू कैन सी द 1 इंचेस रोलर हेयर, जो कि आपकी एक्सरे फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं, एंड दे आर प्रोपेलिंग इट, एंड एट द एंड यू कैन सी अ बिग मास्टर रोलर विच हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 इंचेस इन डायमीटर. और उसके अराउंड अभी हमने देखा है कि वेरियस प्लानिटरी रोलर्स भी हैं, और इसके ऊपर आपके पास जो है वो गाइड शू भी होंगे जो कि हेल्प कर रहे हैं इन द 180 डिग्री बेंडिंग ऑफ ओवर एक्सरे.